You have Good some problem, afternoon, Anand? sir. Good afternoon. My name is Anand Sagar, and my task is to design a search filter page uh, using Figma. So I built this page where user search their services or company, Hmm. and and there is a two radio button where is uh, user maybe search like services sale and maybe to buy service Okay. according to their need. User can select this button when Hmm. user click on search bar and type their company name, yeah, uh, or service, then he will receive drop down menu where search recent search will appear. Okay. And in filter section we have filter like locations where user can easily find their states, territories and cities like this. Okay. After that, here is options, offerings for sale. Here is the different type of services where user looking for, like Okay. IT and software service. In under IT and software service, there are many services like customers software development. That's and after that, company sector. In this, there are options like information technology and digital. After clicking that, under information technology and digital, there are many other options like IT services, web application, web and mobile applications, AI, machine learning, and etc. Okay. And in company type, there are private limited companies, public limited, government organization, public sector, like this. And Okay. in business model, we have two type of business model: sales flow and revenue model. When user click on this drop down button, then user will receive these type of options: B2B, B2C, hybrid, B2G, C2C, and D2C. Okay. And in revenue model, these options are visible: product based model, service based model, subscription, like this. Okay. And these options: income, annual income. This is basically slider, employee count and annual income. This is basically slider where user can slide this and choose the amount of employee or annual income, Okay. same as year of establishment. And this is reset button where user click when user click on this button, all filters are resets. Okay. And this is card view where Hmm. all the informations, not all, brief information of company are available, like Hmm. ratings and verifications by us. And Hmm. this is a bookmark where user can separate their favorite companies Hmm. by clicking on this. Okay. Very good. And this is the email. Hmm. When user click on email, then uh, user can copy this email Hmm. easily. And Okay. if user want to send a message now, then user can click on this email button, and Hmm. this page open the email page. Okay. Cancel it. Hmm. Close the tab. Okay.
Same as for calling, user can Hmm. easily copy the number, Hmm. copy the number, and Hmm. a user can also make a call by Hmm. clicking on the number. Okay. And there is a social media profile of every company, Facebook, Hmm. Instagram, LinkedIn. Hmm. User can visit their Facebook account by clicking on the Facebook icon. Hmm. Okay. So he And can visit to. Instagram, Yes. and there is options to visit company website. Hmm. When user click on the company website, visit website, then Hmm. user will move to their company website. Okay. Hmm. And when user want to see full detail of this company, Hmm. then user click on this uh, card view, then he will move to company profile page. Okay. And this options is when user want to see their results in list form, then Hmm. user click on this button, Hmm. then UI will become like this list form. Okay. Hmm. And user also sort by rating, revenue, employee count, and establishment year. Okay. And user also visit from search page to profile page, home page, home page, and contact page, and about us by clicking on this page and these buttons Hmm. like this. Hmm. Okay. And in last, there is a uh, multiple pages available. Okay. When a user could not find their desirable company, then user will uh, switch to the next page, and Hmm. then they will search according to their needs. Okay. Very good, Anand. So Anand, if the user will click on anywhere except the downward buttons, then he will redirect to the company profile page. Anywhere means this card view, only this Ah, card view, okay. This card view. and Okay. So if he will click on anywhere in the card will view, transfer to the i- profile page. Yes. okay, profile to the company profile page. Okay. Anywhere. Anywhere. Okay. That's good. Okay. And did you prepare the documentation, Anand? Yes, sir. Okay. Then show us what's your plan. Sir, basically, search page contains features like search bar, where user Mm, search their company or services. Then mm, recent searches appears, where user can also search their previous search. mm, And company cards, where the uh, brief information of company, and it also contains social media accounts of company. And mm, user can also write mail and make a call easily through mm, through clicking card view. User can switch to the profile company profile page mm, and see the details easily. And this is a filter sections where filter the where user filter their uh, uh, services according to their needs by mm, clicking on locations and offerings for sale, services, service mm, company sectors and company types.
And for company count, employee count, and annual income, there is a slider where user can slide and select their desirable amount of employee count and annual income. Hmm. And reset button, when user click on reset button, all filters are reset, Hmm. and the user have to again uh, select their locations and Hmm. same process. Hmm. And this is toggle and sorting means sorting by ratings establishment these, and there is a button where user click and make the UI like list form. Hmm. And search page contains crucial information about the company, and also contain the social media accounts where user easily reach out the company, and workflow Hmm. is easy. Okay. And uh, our page also contain have a feature like hover effect. When user go to the options, then it hover, it if effect like hover, and list are uh, uh, list Okay. means hovering Hmm. effect. Okay. uh, Hovering means when he will hover on it, when then cards and better highlight on hover. Okay. This is good. and it's so some list Hmm. uh, like IT sector, and basically Okay. it contain list where user hover the mouse on the Okay. text or the drop down icon. Hmm. And impact on this website on user: Hmm. easy discovery of company. A user easily discover the desirable company, what Hmm. they are looking for. Yes. And for filter makes everything easy for user, because if user want to search like uh, he want to search a company in Delhi, then he will choose the location according to their according to their desirable filter, like locations, company sector, and business model. That's all. And in Hmm. instance instant connectivity, Hmm. user can also contact by mail and email, or visit their website easily. Hmm. And trust and transparency means we have a team like who verified the every company. Hmm. uh, some companies are fraud or real. Enhance engagement, clean Hmm. intuitive UI means UI is basically Hmm. this UI interact user, and Hmm. easy to search everything. When user want to search see the filter, Hmm. they will easily find their desirable filters and search their companies. And Hmm. also they boost their businesses by using this website. Yes. This is good idea. Hmm. That's all. Last point is what boosts business visibility for companies. Share the platform for the exposure to potential clients and collaborates actively looking for their services. Okay, so it means that in this platform, a company can also boost his business visibility, right? Yes. Yes, according to the his ratings, he can be visible on the top of the search list, right? Okay, so this is good idea. Means here we can also give chances to the companies who want to um, expand their market, okay, to all other companies, okay, just like a sponsorship,
We can also provide sponsorships. Okay, if the some companies want to sell or buy generally sell. Okay, if he want to sell some trending things, okay, then he can also we can also give them the option to sponsor their services. Okay, so this will also be going to be an advantage. Okay, so this platform, I think I'm just planning about this platform will not only be for just searching the companies. Okay, because if we are just doing this thing, then there are many websites, okay, who are just doing this. I'm just planning to convert it into such a platform, okay, where the companies will connect to each other and can their show their um, services. Okay, they can advertise their services. Okay, they can connect to other companies. Okay, they can we can say make branding of their companies in this website. Okay, so there are a lot of opportunities that we can implement. Okay, so this opens a, Sir, in few whole much. Yes, Anand, what are you sir, saying? in future we also in Hmm. future, sir, we also make a plan for according to the search count. If user pays Yes. minimum 100 rupees, then he will only eligible for 100 count or 10 count or 15 count. This like this, sir. 10 count, 100 count means I do not understand, Anand. When user we also put a plan feature where user purchase Hmm. our plan to search their companies. Hmm. Yes. That is also an advantage. But I was just thinking about a basic idea about converting it into not just website but a platform. Okay, there is a difference Yes, between a website and platform. Okay, platforms gives you the stage where you can advertise your brands, connect to other companies. Okay, just like you can take an example of YouTube. Okay, YouTube is doing what means everyone want to sell their video. I mean advertise their videos or advertise their brand in the YouTube. Okay, but Google is just doing what he's just giving a platform. Okay, to connect every other companies, to connect every other pupils. Okay, so in this way Google is just giving the platform and earning the 40% of their incomes. Okay, so that is very much smart idea. So if we just can create such a platform, okay, where the different companies can connect to one another efficiently, okay, by modern technologies and tools, then this can just really make a very much good revenue for us. Okay, this website can be really very much useful to the future companies. Okay, so that's our plan is. Okay. So yes, that's nice, Anand. Okay, one more thing I think we are missing is search suggestions. Okay, if we will type on it on the search filters and also on the company search box, then there should be a search suggestions also. Okay, what you want to yes, sir. type. Okay, I mean there will be drop down menus. When you will just click on Yes, drop down menu, then they will see all the options. But suppose if you want to type it, then we will also show the search suggestions. Okay, yes, so sir. this will also be to uh, add it in your documentation. Okay. Yes. Okay, very good, Anand. So next, Rahul, good afternoon. My my name is Rahul Kumar Yadav, and today I am excited to present Figma design I created for a service page that Hmm. allow user to browse and filter companies, presented in a clean and responsive list view layout. Yes. The problem statement is the most service directories either overloaded users information or offer every very basic filtering. Each makes it hard to quickly find relevant companies. Users want Hmm. precision, and that's what this page aims to deliver. Okay. So
First of all, there are wait a second, sir. Okay. First of all, there are two components in this service page. First, Hmm. for the users who want to sell services, and Yes. the second one is the user who want to buy services. This is not Hmm. only for the users, but also for the companies who want to sell services or buy services. Sorry, Yes. for buy services only. Hmm. My goal was to design a highly usable list-based service page where users can use advanced filters. Where you see on the left side of where you see on the left side Hmm. advanced filters and view detailed information without clicking each items. Hmm. Easily compared with multiple companies at a glance. There are if you user or user try to Yes. watch every detail of the company, he uh, then he first filter each details in which I made in the left side of this service page, and Yes. the sec and then is in the downward direction there is a horizontal bar where Hmm. there are various informations regarding the company's names, uh, the phone number of the company, Hmm. email ID of the company, Hmm. and website of the company, company types, Yes. Hmm. company sector, and the address of the company. These are the details where users want to see the company, Hmm. and then there is a head bar at the top. We have a sticky navigation bar. Hmm. Wait a second, sir. There is a navigation bar in which the links are there are various links in which profile where user want to click the profile, then he go to the Hmm. profile page of this company. Hmm. Uh, with Profile of the user. user Right. sorry Hmm. user, Hmm. and then Hmm. Hmm. and then is a, there is and then there is a at the below a simple headline encourages exploration and a search bar allow keyword based lookup. Hmm. If a user want to see the Hmm. if a user want to see more information about the company, then he click the company name, and Hmm. then he go to the company information page where Yes. he show all the company details of company name details, all the company details Hmm. about the company, and Okay. there are filter side at the left side where there is advanced filter in which the company type. If the Okay. user want to click the Uh, wait, Rahul. Wait a second. yes, Where it will click so that it will redirect to the company profile page. so if we click the use company's name, Okay, company name. Right. That's good. yes sir. Okay. If we- company name, Hmm. then you go to the company's profile page, and Okay. Okay. where he see
all the information regarding the companies. Hmm. And then there is a various search bar filter section. Sorry, there is a various filter sections, advanced filter sections, Hmm. Hmm. where there is a location. If the user Hmm. click the location, there is a drop down menu in which uh, all the states are present in this Hmm. drop down menu. And Make it here 100%, Rahul. Make it 100%. Okay, so that we can see. Hmm. there is a sensor. If user Hmm. click on the location, then he go to all the states where in India present. First of Hmm. this website is belong to currently on India services. Then we Yes. that's why we start with all the asteroids, all the in Yes. location. First of all, the users search select the states, and then he choose the city, and then Hmm. that's the location of the filter section. After that, there is a and after that there is a offering for sales means the offer means the services that offer, Hmm. and there are various services we offer for the buyer, for the seller, that the IT and the software services, digital marketing services, e-commerce and retail services, and etc. There is a business, there is a industry. There are that we know that there are various industries present in India, Hmm. and this this website we belongs to all the companies types, such industries where information technology and digital engineering and manufacture and many more. Yes. And there is also a company. There's also a company sectors which Hmm. the company is like previous limited company, public limited company, government limited company, and many more. Hmm. And at the last there is a various, and on the right side we have the main list menu. When you see Hmm. when you see there are on the one side there is a company's name and the other one is all companies details. Yes. And at the last on the bottom we have added a pagination. Hmm. There is a pagination we to load more companies in chunks and improve performance. Okay. So if you want, then I thought there are various they I thought the tech stack for the implementation. Suggest if you want to suggest me that if I say this uh, presentation, then I want to ask you for the Yes. मैं सोच रहा था कि इसमें बहुत सारे टेक स्टैक मतलब यूज़ कर सकता हूँ, जैसे टेक स्टैक हाँ. जैसे कि बहुत सारे जैसे रिएक्ट जेएस हो गए, टेलविंड सीएसएस हो गए, हाँ. और कंटेंट एपीआई और रिडक्स हो गए फॉर Yes. फिल्टर फॉर फिल्टर स्टेट मैनेजमेंट्स। Hmm. ये टेक स्टैक हम यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट्स को बनाने में। हाँ. We can use it, यस Rahul. यस बट हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे रिएक्ट एंड टेलविंड से, ठीक है? यस उसके बाद देखेंगे कि किस किस की और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? बूटस्ट्रैप का भी यूज़ करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे, ठीक है? ओके अ, उसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फीचर, जितनी इसमें फीचर्स है उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन से और एडवांस टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम लोग वो भी यूज़ करेंगे, ओके? ओके सर। ओके, सो राहुल, आई थिंक one thing is missing. कौन सा? Mm, the columns, I think at least 4 columns should show on one screen. Okay, सर so that the एक्चुअली user can see.
at least three columns, okay, by sliding. So if we just reduce the width of each column a little, then I think it can be adjusted. Okay, sir. Okay. Rest of things is good, okay. Okay, sir. And so did you prepare the documentation or you want to show it on tomorrow? So I tell you that I told you that I saw the tomorrow's. I saw Okay, on the okay, 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 Rahul. Then we will see it on tomorrow, okay. okay, sir. Okay, Thank you, sir. thank you, Rahul. Okay, so now Asutosh, are you Yes, ready? yes, sir. Yes, sir. Okay, Asutosh, you have really worked very much well in your piece. Okay, so now I Thank you, want to sir. see your ideas, Okay, sir. how you want to present it. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Hello, my name is Astus Pradhan, and my task is to design a profile page for companies that are listed in our website. So Yes. there are total nine sections in this page. Let's start from the first section, which is the navigation bar. Hmm. In navigation, there are one back button. If the user click the back button, then it redirect to the company search page. Yes. Then there is also a home button. Yes. It redirect to the home page of the profile. Hmm. Then there is a export result section that redirect the search page, which is the reset search page. There is nothing search Okay. Okay. default state of the search page. Hmm. And there is on the right side there is a small icon, profile icon, that Yes. if the user click the profile icon, then there are three options will provided. One is profile, Hmm. we lead them to Hmm. their profile page. Yes. Hmm. It, and there is also user can switch their accounts, then they can log out from here. Hmm. Then the second section is the company overview. Here the logo of the company is provided here, and the company name, and there is a verification tag, the company is verified or not. It, Hmm. and there are small detail about their industry and that what they are doing, like software development technology. Their industry will provide under the company name, and Hmm. when did the established company establish. There are provided here, and location and the rating of the company is here. And there is one Hmm. download button here, so it Yes. can download the whole page in a Excel sheet or PDF as per their requirement, user requirement. Yes. And the next section is the company information card section. Hmm. Here the detail of the company are provided, like CIN number, CIN register number, GST number, and name of the director, Hmm. company email, phone number, and their website link, and their Yes. addresses, and their social media links are provided here. Hmm. And what certification at their company get, so their certification are also provided here.
And the Okay. CIN number, registration number, and every company don't provide the registration number and get GST number. So those Hmm. company provided, they're only listed here. Those company Yes. listed here. Hmm. And the next section is about the company. Here the short description about the company, what they do, what is about their company, and what is their goal. It's provided Hmm. here. If the user Yes. can inquire about their company in a short, they can see here without going to their websites. Hmm. And here are the services that offer. The company that want to sell, or if the user want to sell services, they can see here the services. If the users that want to sell the services not listed here, they can approach this company and want to sell their services to this company. If the user want to Yes. buy the services, they can see the services that are provided by this company. If the user want to buy the software development services, Hmm. so if the user like this company, is the user friend, Yes. thus they can contact this company and buy their services from the company. Hmm. And the next section, there is a financial insight of the company. Here are the annual Hmm. revenue, net income, and gross margin of the company are provided in the line chart view. Yes. Line chart view. Here can Hmm. they here every detail of the light here they can see like monthly wise, and they can also see here by clicking the drop down yearly wise. There are two options provided, Okay. Okay. and they can switch That's good. between the profit revenue and stock margin prices. It's Hmm. so the user can decide based on the if they want to contact this company for their business or not. They can see this page and decide that. Okay. Okay. And next, and in the next section is the similar company. Those companies, if the user did not like this company, or I mean, with like to see more company like this, Yes. then he can. There are some option provided here Hmm. that he can see the similar type of company that are more similar to this company and services like that are listed here. If the user then Yes. there are more company are listed, like there is a scroll option, so user Hmm. can see more company. If then there is a comparison table, like Yes. this is the current, the first company will be the current company. Here the Hmm. detail of the current company will be listed, like rating, location, year of established in industry, main services, employee count, annual income, and certification. There are the list, the current company are listed here. if Hmm. if the user want to compare the company current company with other company, like company number for company, if then the user can Yes. click the company number 4, so the company 4 will be added to the list here. If the user Hmm. want to more add more company, then he can add more company, like company 5, Hmm. the company 4 will be added, and this section will be stay here, only this will be moved, so the Yes. user can easily compare both Yes. in Very good. one go without section. Hmm. And here are the link of the website that provided of the company that are here comparison here, and that download Hmm. profile will be there. And the Yes. last section is company review section, where Yes. we select them based on the two type. One is buyer review and other is seller review. The buyer review means that the user who from this company, buy services from this company, their review Hmm. is listed here on buyer review. Hmm. Like Yes. there we listed here, their rating will be here, total rating, and in seller review, Yes. the those user who sell their services to this company, that review be about like their reliable buyer, smooth transaction, like there will be listed here, Hmm. their reviews. And the Yes. last thing is that writing review. Here is Hmm. we provide the star system that can provide the based on their star rating. Then the user Yes. can select their role, like their I am at the what role you are, buyer or Hmm. seller.
If you are buyer, then you can Yes. select buyer or then review your title. Like here is the title like excellent client to work with. Here's the title. Then this you can Mm. write the your review, actual review, what you like, dislike, and what can the company improve. So you can basically give the review on based on the what you see. Yes. Very good, Asutosh. Yes. Thank you, sir. Swastos, did you also prepare that documentation? Yes, sir. Okay, then show it. Okay, sir. Sir, yeah, the first section, like I said, this is the documentation. Our primary goal of this page is to visual appearing and user-friendly company profile page for B2B platform. It helps Hmm. user to understand company offering, credibility, and performance of a glance assessing in B2B decisions. Hmm. The tools that use in this are Figma for wireframing and UI design. Yes. The page selection description, like the top section will be the header bar, like I said, including with home and explore result and user profile of the user profile of the contain a drop down menu. It will contain profile, switch user, and logout option. The three option. The profile option take the user to the profile page, and the switch Hmm. user allow the user change to current user profile, and the log out the user out of the section. Yes. Then there is company. The next second section is the company overview card. Hmm. There will be the company name and logo presented, then details of the company like industry and founded year, location, rating that will be provided here on the top. Then yeah, Yes. a button will be provided download profile for B2B lead capture. Hmm. That download their profile in a PDF or their interested format. Visual bench icon trusted industry like certification and star rating. And if the industry is verified, then there is a verified badge will be placed Hmm. in the name of the company, left side of the name of the company. Then company detail box, then the company card box, then the CIN number, GST, founder contact, extra number will be displayed there, website, email, address, and social media and certification. This is the Yes. third section. And the post section is the about the company. What are the describe the mission, vision, and services provided by the mission of the company. Offer Hmm. offer contact to personal investor to client. Like the story of the how the company started, when the company started, and what are their missions. It will be provided on this card page section. Okay, Yes. and the next is a service offer. Here will be the all the services that the company is offered will be Hmm. provided here. Hmm. You you use a color tag to indicate the different services. Example, software development, data analysis, etc. Yes. It will be we use color tag because it will be eye catching. If the user want see something like colorful, then they want to like more attract to that. So Yes. Yes. that's why. Hmm. Then the next is the graph section, the financial insight. It will show annual revenue, net income, and market capital and gross margin Hmm. of the company. Yes. In a line chart form for revenue try help you quickly understand and perform over time to make the decision about that company. It will help. Yes. And the next thing is the similar company. It offers the car based suggestion with quick action button with compare and view profile. Hmm. The compare can, if the user click on the compare, that it add the company to the compare table that they provided. I will go to the next here. Then there is a view profile that redirect the company profile page of the that company. Hmm. It increase user engagement and provide the alternatives for their businesses. Yes. Next is a Wait. Wait. comparison. Wait, Asutosh. Uh, What is the properties on which similar companies will be shown? it's like their industry and services and location will be so. Okay. So according to what filters we will show the similar companies? Uh, Like if the user select IT industry, hmm. IT industry, while searching the company search feature, it will affect the search result here. If the user select IT and services as software development,
So Hmm. the company will be similar company will be so with the company with IT industry and software development, which is close to the this company, best similar to the Yes, currently showing company. yes, we have to just decide the certain criteria on which the similar companies will be shown. For example, they sell the same services, they have almost same capital revenues, they have almost same ratings. Okay, but Okay, sir. some particular thing is we can say specialized for that company. Okay, so Okay, this sir. can help The the users to select the similar companies. Okay, yes, sir. suppose if The more sir. yes, if he want to sell the services to more companies, then he can try the similar companies. Okay. Yes, sir. So on the basis of these criteria, we can just show the similar companies. Okay. Yes, So sir. The just more similar, sir. hmm, yes, matlab just I mean we can just add something in this similar company section. Okay. That how we will just show the similar companies. Okay, based on what criteria and uh, based on what filters. Okay, Yes, sir. so you have to just write a little here. Okay, so that we Okay, can sir. implement it in the code. Okay. Okay, sir. I was Yes. thinking like this, sir. The more similar company will the listed first, sir. Huh. Like Yes. the company the more similar, it will be get the first in the list. The less Yes. similar Yes. will the last Hmm. like that. And the Yes. next is the comparison table. Hmm. And there is a compare button on the similar company. If there is a Hmm. click that button, the detail of the company will added to the table of the right side. Yes. The selected company is dynamically added to the comparison table to the right. If already added, clicking again will be either do nothing or remove or it is the optional behavior. Yes. Yes. And the comparison table give the detail of logo, name, rating, location, year of established, industry, services, employee count, annual income, and certification. etc. And there will be website link and download profile button. The details are provided Hmm. here, Yes. and it Yes. it helps the user to perform a side by side evaluation, so they can decide which is better, which company is better Hmm. in what condition. It enhances the decision making by allowing the user to visually analyze the multiple companies at a time. Maintain a context, or agent User don't need to leave the experience page. benefit. Enhance the Yes, sir. decision making by allowing users to visually analyze multiple. Explain this, Asutosh. What is it? Sir, okay, like, wait a minute, sir. Enhance decision making by allowing users. Like this, sir, if the like this input text system and company Hmm. number two are there is let's say this company rating has 4 and this company Yes. is rating is 3 company 2, so the Yes. Yes. is rating with the best company is the current company, so user can Hmm. decide the which company is best according Yes. to the rating. If the is from another state, like Hmm. if the user is from Chennai, Hmm. so seek the company two is from Chennai. So mm, user can select the Chennai because his hometown is Chennai. So like that, the decision making Yes. is affect Hmm. the selection. So Yes. Yes. it will provide like that. First of all, Asutosh, we have to figure out that for what purpose the users will use the similar company. Okay. So the goal is very much clear. Suppose if he want to sell his services to a company, okay, and he Yes, just find out that this company is good for me. Okay, I can sell yes, sir. him the service. Okay, then the similar companies tag will show all those companies who is just similar to that company. Okay, means there's also possibility that they can sell their services to those companies too. Okay, Yes, because sir. they have the same criteria just like that Yes, company. sir. Okay, so we have Yes, to sir. just design a full documentation of a filtering system on the basis of which we will find the similar companies. Okay, so on the Yes, sir. basis of which we will list out the similar companies. Okay, so just you have to work on it a little, just expand the documentation in the similar companies section. Okay,
that how we will just list out the similar companies, okay, on the basis of what uh, criteria, what algorithms, okay. So on the basis of what things we will just list out the similar companies, okay. So you just have to work on it a little, okay. Okay, sir. Okay, so you just update it, and you can just show me on tomorrow, okay, Asutosh. Yes, sir. Okay, sir. Hmm. And Okay. there is a last section, sir, the company review. Hmm. Here is the rating of the company, like star-based breakdown will be review provided. And there is Hmm. two tab for, like I said, buyer review and seller review. So it can what type of user we target. If the user is a buyer, so they can see the buyer review. If the user is Yes. seller, they can see the seller's review. Yes. In the short future, a drop down will be provided, like most recent search, the highest rating, and the most trusted user. Their review will Hmm. be placed on the first. It continually is Okay, list view. there is a sorting feature also. Yes, Just sir. show me in the UI. Where is it? How we can just sort the reviews? Okay, This one, here. sir. Yes, yes, yes. I just Yes, forgot. sir. Yes, yes. That is good. Okay, Asutosh. Okay, sir. Hmm. And the last one is the submit review form. The user can Hmm. write their review and select their role based on what role they are, buyer or seller, and write the review. First write the title, then description, then they can submit by pressing the submit button. Yes. Yes, sir. This is the my page. Okay. Okay. Very good, Asutosh. So we just, I mean, you just have to update a little in the similar company section, okay? That Yes, sir. because this is very much useful for us, okay? Because suppose if someone will find a company which is good for him, okay, then he can just also the similar company tag can just suggest him all those kind of companies which is almost same in nature, okay, just like that company, okay. So Yes, means it can help him to uh, expand his business, okay. So I think this should be designed very much carefully, okay, that how we will just figure out, I mean how we'll just filter out all those similar companies, okay, on the basis of what criterias, okay. So just to make a little design of this system, okay. So how we'll just shortlist the similar companies, okay. okay, So sir. the basic idea I just told you the basic idea, but you can also add your ideas, okay, and how we can just do it, okay. The basic Yes, sir. goal is we have to just remember the basic goal, okay. So basic goal is that if the user will find a company and he will just figure out that this company is best for me, then he can just also see the similar companies which is just like it, okay, so that it will help him to sell his more services to these companies, okay. So that way that can be very much useful for a user, okay, for both the buyers as well as sellers, okay. Sir, this. Okay, very good, Asutosh. Thank you, So sir. tomorrow, yes, thank you. So tomorrow you will submit it, the updated documentation in which we will figure out how we will just shortlist the similar companies, okay. Okay, Asutosh, thank you. Okay, thank you, sir. Hmm. So next, Ranjan, are you ready? Hello, Ranjan. Yes, sir. Yes, Ranjan. So you can continue. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, mm, this is a design of homepage.
This design, mm, this design is crafted to attract, engage, and convert user by providing intuitive access for to reach business data. Yes. Okay, so this is the first section, header. Starting Hmm. at the top, we have the header, which contains our logo on the left for brand. Wait, yes, sir. On the Yes. left, the logo is here, and for it, it is used for brand identity and user recognition. And on the right side, we have included sign in and sign off buttons to help users quickly access or create accounts Hmm. by using this two button. And Yes. at the center, we have four drop down filters, and the search filter. Right, and the hero Hmm. section is just the we begin the with a strong headline like a smarter B2B company insights at your fingertips, Hmm. which immediately conveys our value proposition. Okay. Or below it's a shorter line explaining how we offer comparison, decision making support, and insight driven data. Hmm. Okay. Yes. And this is a 3D illustration, adds a modern tech savvy feel, represents intelligence and connectivity. Yes. That's why I use this Hmm. 3D Very good. images. Very good, Ranjan. This section is all about grabbing attention and encouraging users to engage. This is Hmm. first section. Yes. After that, there is one section why people select our website. So Hmm. we have entered why people select our website section. Here we list key trusted building features like reliable data, powerful Hmm. analytics tools, AI systems for search and recommendation, and Yes. one is extensive business database. So Hmm. we can also see by using this. Hmm. It's- Machine slider. Yes. it's, we automatic. This is automatic. It runs after 2 seconds, 1 second around. Yes. Okay. Hmm. And if you Yes. want to see backslider, then simply you can use this arrow button. Yes. After that, there is a section inside Spotlight. Hmm. This is a dynamic system will show real-time business data such as market growth trends or sector updates. For example, I mentioned 62% of companies in the fintech sector grew up 20% last year. Hmm. So it gives user valuable data-driven content upfront. This keeps the homepage alive, relevant, and insightful. Yes. And there is another section, why we are the best. Uh, Here we highlighted our strongest tag like dynamic real-time business insights, UX Hmm. optimized design, and daily refresh data. And fourth one is the multi-channel support, chat, phone, and B2B advisor. We Hmm. also added a real image of our team. Real image of our team, not this is a मतलब जब हम when we develop our website, we can also implement the real image of our team to Yes. humanize the brand and build authenticity. Hmm. This combination of facts and emotion builds trust with visitor and investor alike. Yes. Okay. And there is one another platform utility. In this section, we have built this for we represent five core user personas. That's like first one is buyers, second sales teams, third marketing professionals, and one product manager, and fifth one is the research team. Each Hmm. user type has a clear visual card to help visitor quickly identify how the platform serves their specific Yes. roles. Hmm. And this structure also supports targeted marketing strategy in the future. Yes. And after that, this is a like data stat section.
which this section Uh, is designed to impress with data. Yes, sir. chapter. Yes, Ranjan. What we will show here in the platform utility, buyer sales team, marketing professionals, product manager. So we will show the Sir, pictures. in the buyers, Hmm. we get supplier data and compare option. And in the sales teams, we identify leads and market trends. Okay. And in the marketing professional, we can analyze buyer behavior and targeting. Uh, so what thing we can show here? The images of something, or Yes, sir. so what images will use? So sales may we can use arrow Okay, go arrow to the horse. right. Buyers may we can use normally one image of person like this. Uh, Okay. Yes, means we can also show the our records of the buyers and sellers. Okay, how they just got the benefits from these websites. Okay, what's the graph? Okay, I mean how many revenues they generated by sellings. Okay, how many businesses just driving around using this. Okay, I think this thing we can show here. yes, sir. Or In the sales, we can implement a graph that so that goes either upward. Upward is actually we do not show a downward because this is a degrade our platform. This platform. So we saw an upward going arrow in the graph, and in hmm, buyer we can also show two people's. market. Okay, so we can just put here the images of some of the most trusted companies who uses our services. Okay, and in the sales team, what we can use? We can identify leads and market streams. Sales teams. Okay, so lists and market. Mm, sales team. I don't understand what you are trying to use here, Ranjan. Sales teams. Sorry, it is simple, just like the B website. It's go up right after years and years by analyzing हाँ any data. अच्छा तो सेल्स टीम्स का हमें यहाँ शो करना चाहिए क्या क्योंकि हर कंपनीज में अप एंड डाउन तो होते रहते हैं ठीक है Except we तो cannot show downward नो नो website because this is a yes yes but I think we should show the reliable data right yes. but I think we should just focus more about how many companies gets benefits from our websites okay that Yes, thing we sir. can show I because also definitely saw if the website is this is on then reliable. Yes, yes, if the website is on, then definitely there will be most of the companies who will get benefits from here. Okay, so just like in the college, we do not show uh, the employees who just failed here. We mostly show the employees who get uh, benefits from here. Okay, so that's why. Okay, because in everywhere there is a possibilities of upgrades and downgrades. But I think we should just we can show here the companies who just gets benefits from this website. Okay, so I think that's all. I think we should just that is enough here. Okay, I mean we should use all those companies who just get benefits from this website. Okay, and who just trust it and he just commit something about it. Okay, so these things we can show here. Okay, means we should show how the companies are getting benefits from here. Okay, that thing we should show. That will be enough. ओके क्योंकि कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो इसीलिए आ रहा है ना कि उससे यहाँ पे आके क्या फायदा हो सकता है ओके सो हम लोग यहाँ पे sir. दिखा सकते हैं कि कितने सारे कंपनीज Yes, जो है इस सर्विसेज का यूज कर रहे हैं ठीक है
and how they just in the past years how they just gets benefits from here. Okay, all these things we can show, right, Ranjan? Yes, So sir. आई थिंक सेल्स टीम्स के यहाँ हम लोग ऐसा कुछ शो कर सकते हैं. एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? मार्केट Marketers can use company filters, जो कि आनंद develop this filter section. marketing professionals means what we will show here. Marketers can, sir, this is only for representation, what we used in this platform, company info website. So marketers can use company filters and performance data to design targeted campaign that reach the right audience. Change this. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पे क्या हम लोग किसी इमेज को दिखाएंगे क्या प्रोफेशनल्स के? Yes, sir. अच्छा, मतलब जो कि यहाँ से बेनिफिट्स ले रहे हैं ऐसे कंपनीज Yes, sir. In मार्केटिंग. the sales team, we can get access to verified, like sales teams get access to verified company profiles, helping them हाँ, prioritize higher help like this. ओके. एंड So this is मार्केटिंग. only representation. This is not a page to read that another page like. This is हाँ, just representation. प्रोडक्ट मैनेजर रिसर्च टीम्स. Why we use this, like which company used our website, like sales teams, buyers, हाँ, and marketing professionals, and product manager research teams. हाँ, तो हम उनके यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं ना, जिन्होंने Yes, यहाँ से. उसके related I can. हाँ, उसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे लगाया जा सकता है. यस. ओके. and in the प्रोडक्ट मैनेजर्स. हम्म. and in the product manager, gain access to industry-wide trends and competitor features, हम्म. helping them build what user लेकिन actually want. हाँ, लेकिन रंजन हमें यहाँ पे कंप्लीट यूआई बनाना होगा, क्योंकि हम इसे कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे पहले हमारे पास Yes, फुल प्लान होना चाहिए, नहीं तो हमें पूरा कोड को बदलना पड़ेगा, है ना? तो sir, हमारे पास only picture कंप्लीट. is not given to but we also to design. I implemented design, but only picture is not there. हाँ, ठीक है. तो यहाँ पे रंजन आप इसे थोड़ा अच्छे से प्लानिंग Uh, करके यहाँ पे हम can क्या I डालना चाहते write a description of this buyers something? हैं. हाँ, मतलब जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हो उसे अच्छे से इसमें प्रेजेंट कर देना है, ताकि हम लोग इसको जब कोड में कन्वर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए. ठीक है? ठीक है, Yes, sir. क्योंकि हम एक ही बार में हम बनाएँगे ना, उसके बाद फिर इसे बदलने के लिए हमें कोड को एडिट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है ना? तो इसीलिए हमें पहले से ही इसका कंप्लीट यूआई को रेडी रखना चाहिए. कुछ इम्प्रूवमेंट्स बाद में आते रहेंगे, ठीक है? उसे हम लोग अपडेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हम बेसिक डिज़ाइन जो होगा, वो हम रेडी रखेंगे. ठीक है? और ऑब्वियसली समय के साथ नई-नई चीज़ें आएँगी, उससे हम इम्प्रूव करते रहेंगे. तो स्टार्टिंग हम लोग ओनली बेसिक चीज़ों को ही डालेंगे, बहुत एडवांस चीज़ों को नहीं डालेंगे, जो हमारे पास है ही नहीं. जैसे अभी बायर्स सेलर्स जो है, ये वेबसाइट जो स्टार्ट ही हुआ है ना, तो इसका अभी हमें ज़रूरत नहीं है. स्टार्टिंग में हम ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं अपने अ, यूटिलिटीज़ को दिखाने में, ठीक है? ये वेबसाइट किस तरीके से मार्केट से कनेक्ट करता है, ठीक है? कौन से फीचर्स देता है, जो कि बायर्स एंड सेलर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म्स बना देता है. Okay, so in here they can advertise, they can filter out all those companies to which they want to sell their services. Okay, तो फर्स्ट लुक में हमें इसे फोकस करना चाहिए ज़्यादा. फिर जब धीरे धीरे वेबसाइट ग्रोथ होती है तो ये सब चीज़ अपने आप ही आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट में तो हम इससे शो नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट लुक में ऑब्वियसली हमारे पास ये सब नहीं होगा. तो फर्स्ट लुक में हमें ज़्यादातर फीचर्स पर ही फोकस करना चाहिए, और कैसे करके जो है जो बायर्स और सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म देता है. Okay, which can make their company to run, to connect to more and more pupils. Okay. Sir, we can hide this हाँ, after अभी के लिए इसे many years we हाइड can. अभी के लिए इसे हाइड कर दिया, या फिर इसके यहाँ कुछ ऐसा लगा दीजिए, जैसे कि जो कुछ फीचर्स को हाईलाइट करे उस टाइप का. ठीक है. ऐसा हम लगा सकते हैं, नहीं तो फिर अभी के लिए इसे हाइड भी कर सकते हैं. So, ठीक है. हम्म. हम्म. ओके रंजन. that this is a one section, stat section. Section हम्म. is designed to impress with data. हाँ.
and it includes key platform statistics like 57 million plus companies and Employees 28 means what, Ranjan? 28 million employees. uh, सर जो कि एम्प्लॉय का कुछ डाटा सीईओ सेक्शन आई कैन extract this. Employees means the pupil will also use this website. Okay, that is employee or something else. रंजन, यहाँ पे एम्प्लॉयज का मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया। मतलब हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज 28 मिलियन मीन्स एम्प्लॉयज। जैसे कि सर जैसे डाटा हम लोग वी कैन आल्सो एक्सट्रैक्ट सीईओ नेम एंड दिस डाटा ओके, like हाँ we वो provide चीज। detail we तो यहाँ पे provide detailed एम्प्लॉयज नहीं employee लिखे, level यहाँ पे data. वी कैन राइट 28 मिलियन इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स। ओके, समथिंग लाइक दैट वी कैन राइट। ओके, 28 million In in sir, industrial contacts. okay, Okay, something like that. 57 million plus companies, 28 million in industrial contacts. Okay, thereafter 300 buyers actively sourcing and suppliers. Hi, this is 57 also good. and this is for just like over 57 million company profiles I uh, Hmm. loaded in my database, just like extensive database we can use to store all Okay. the data in our database. Like one company have their CEO name, just like Hmm. 57 million companies data I have stored. And Okay. you can see and after that there is 28 million we provide a detailed employee level data. And for buyers actively we have mapped over 300 b2b categories, allowing user to 300 buyers filter. actively sourcing. 300 buyers. Buyers means what? खरीदने 300 वाले. buyers actively sourcing suppliers. 300 categories, no? 300. So 300. that we have organized companies into more than 300 categories that reflect how business buy and sell from each other. हाँ, तो इसे थोड़ा मतलब इसका टेक्स्ट को थोड़ा बदल दीजिएगा जिससे कि वो समझ जाए कि यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे 28 मिलियन एम्प्लॉयज और 300 बायर्स एक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ और लिखना होगा सो दैट कि यूजर समझ जाए कि हम क्या यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है रंजन। उसके बाद क्या है, 70 मिलियन प्लस टारगेट ऑडियंस। हाँ, दिस इज गुड। ओके। With the with a 70 million plus target audience, हम्म। we empower marketers and sales teams to launch यस यस। wide-reaching data-driven campaign. हम्म। After that, this is another section. This is the last section, footer section, in which I provide a home profile, company's contacts about us, हम्म। and this is a mm, company Instagram profile and LinkedIn and Twitter. ओके, एंड व्हाट इज द ज्वाइन बटन? Join go to the like sign up page, can साइन अप पेज। यस यस। starting हाँ, page. यस यस, ज्वाइन बटन। ओके, show me what you have written there. Make your digital and control with us, join. And what is written in the foot in the bottom part? All rights reserves name. Zoom in, just zoom in. Just make it a little large. Try to zoom in. Uh, all right, reserves. Okay. Okay, I will just see it. Okay. Uh, at the rate name 2025. All rights reserved. Oh, see name 200. Okay, ठीक. That's good. We can just change it later. Okay, so Ranjan.
I think. Mm, so I think there is some parts we have to remove. Okay, and some content we need to update, like that thing. 57 million plus. That row. Okay, 28 million employees, 300 buyers actively sourcing suppliers. Okay, this thing we have to improve. And I think in this part where you are showing the utilities. Okay, platform utility. Okay, here I think we can just show the platform features. Okay, something like platform features. Okay, oh, it should be like uh, platform features. Okay, means in the first look we do not have most of these data. Okay, means how many buyers are connected to us, how many sellers are connected. Hello, sir. Okay. Yes, 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 Ranjan. Sir, sorry for this disruption. Sometimes my Firefox struck like freeze. Okay, okay, ठीक है रंजन. Okay. Okay, sir. So your presentation is good. Okay, but we just have to I think this section we have to update. Okay, because when we will build the first look of our website, then definitely we do not have the, I mean, buyers list, sellers list. Okay, how many companies are connected to us. So here we can mostly focus about the features. Okay, what features are given by this website. Okay, how they can just easily connect to their target companies. Okay, I think we should just focus more on it. Okay, thereafter when its use will increase, then we can just add the rest of the things. Okay, means when it will start connecting to the other companies. Okay, more and more people will get benefits from this website. Okay, then we can just add something like this. Okay, in below of the platform features. Okay, so just edit it to platform features. Okay, platform features. Okay, and thereafter just show here a slider where we will describe something like how you can just use this website. Okay, and how it just uh, helps the companies to reach their target companies. Okay, I think mostly we should focus on it. Why people select our website, And these this are also section good. also say uh, I think reliable data we something. provide and Yeah, I think something like documentation. Okay, we should just try to show something like a documentation. Okay, I mean where first user can see how we can just use this website. Okay, तो ये चीज होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि फर्स्ट लुक में तो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये तो हमने डिजाइन किया है. ठीक है, यूजर को कुछ नहीं पता है. तो यहाँ पे अगर होम पेज पे एक सेक्शन ऐसा भी डाल दें कि इस वेबसाइट को कैसे किस प्रकार से ये वेबसाइट जो है कस्टमाइज करता है हर चीज़ों को, और कैसे कोई भी कंपनीज या कोई भी पर्सन जो है अपने टारगेट कंपनीज तक पहुंच सकती है इसके थ्रू. ओके, तो इसका मुझे लगता है एक सेक्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए. तो प्लेटफॉर्म यूटिलिटी की जगह प्लेटफॉर्म फीचर्स कर दीजिएगा. ठीक है, और यहाँ पे एक स्लाइडर लगा दीजिएगा जिसमें हम लोग उन सारी चीज़ों को दिखा सकें. ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ ठीक है, खाली इसे थोड़ा एडिट करना होगा आपको. 300 बायर्स एक्टिवली सोर्सिंग सप्लायर्स, क्योंकि ये sir, डेटा भी हमारे पास अभी नहीं है. after हाँ, sometimes we can write this section also. हाँ, हाँ, Uh, मतलब ये पूरे सेक्शन को भी हटा दीजिए. ठीक है, कहीं पे इसको रफ में जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए. ठीक है, और फिर बाद में इसे यूज किया जाएगा. इसके जगह पर हम लोग बनाते हैं प्लेटफॉर्म फीचर्स. ओके, क्योंकि अभी हमारे पास यही है. ठीक है, तो हमारे पास तो अभी बायर्स की कुछ फीडबैक्स नहीं है, तो हम मोस्टली अभी यही यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्लेटफॉर्म फीचर्स. ठीक है, तो मतलब इस पूरे पूरे सेक्शन को जो है हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म फीचर्स से रिप्लेस कर देंगे यहाँ तक के पूरे सेक्शन को. ठीक है, एंड दिस विल जस्ट वर्क. ओके, okay, sir. ठीक है. एंड एक और चीज, ये जो हमारा स्लाइडर है, इस स्लाइडर को मैं सोच रहा थोड़ा सा
ज़्यादा डिटेलिंग हो जाता। डिटेलिंग मतलब उसमें ऐसे इमेजेस Sir, हों। after reliable data, I can implement a हाँ, short description like हाँ, the company says like we have a reliable यस, data. Why? हाँ, हाँ, वो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डमी इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके। और बाद में सिर्फ हमें इमेज का लिंक को बदलना होगा एंड वी कैन जस्ट यूज़, ठीक है, तो ये भी चलेगा। ओके, तो बस हमें जो है यहाँ पे ये चीज़ करना होगा, इस सेक्शन को बनाना होगा। और कोशिश करिए इसमें जो स्लाइडर्स जो हमें दिख रहे हैं, वहाँ भी हम 3-4 कुछ ऐसा इमेज डिज़ाइन करके अगर हम यहाँ पे डाल सकें, क्योंकि ये फर्स्ट लुक होगा हमारे वेबसाइट का, तो आई थिंक यहाँ पे हमें कुछ उस टाइप का इमेजेस को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना? Ready? तो अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बेसिक सा कुछ इंटरनेट से ही देखिएगा, गूगल इमेजेस से बहुत सारे मिल जाएँगे, ठीक है? उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह आपको थोड़ा-सा लिखना पड़ेगा, तो इन दैट वे वी कैन जस्ट मेक इट, ठीक है ना? Yes. तो मतलब आपको डिज़ाइन नहीं करना, बस गूगल इमेजेस से खोज लीजिएगा। तब तक के लिए स्टार्टिंग के लिए होता है जैसे एडवर्टाइज़मेंट के लिए बहुत सारे और रेडीमेड इमेजेस को हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं रहता है तो वैसे ही है, मतलब बिल्ट इन बहुत सारे आपको मिल जाएँगे। तो तभी के लिए हम लोग अभी इससे लगा देते हैं, ओके। बाद में हम लोग बस उसके लिंक को चेंज करके उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ़ इमेजेस को थोड़ा-सा कर दीजिएगा, ठीक है? गूगल इमेज में आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। एंड ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम प्लेटफ़ॉर्म फीचर्स को दिखाएँगे, ठीक है? सो रेस्ट पार्ट इज़ गुड, ओके? बाकी सब आपका डिज़ाइन सही है, ठीक है? Thank you, sir. एंड एक और चीज़ जो हमें लग रहा है थोड़ा-सा मिसिंग है वो क्या है? AI उम, features. नहीं वो सब तो ठीक है। अ, मतलब ये इनका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड आई थिंक फिर भी ये ठीक ही है स्टार्टिंग के लिए। लेकिन ये इसमें हमें कुछ ऐसा बैकग्राउंड डालना होगा जिससे कि कुछ उस टाइप का लगे वेबसाइट के लुक में। भले ही व्हाइट ही हो लेकिन व्हाइट में भी बहुत सारे होते हैं ना, ग्रेडिएंट कलर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो वैसा हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि थोड़ा-सा प्रोफेशनल लुक हो इस वेबसाइट का। ठीक है, मतलब डार्क थीम मत दीजिएगा, व्हाइट मुझे पसंद है। मतलब व्हाइट से सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। मतलब व्हाइट में ही हम लोग होते हैं ना थोड़ा-सा ग्रेडिएंट्स बनाते हैं। जैसे कि ये इसमें देखिए जैसे आपको बूटस्ट्रैप में क्या है टेलविंड में, उन्होंने व्हाइट का ही यूज़ किया है थीम का। लेकिन उन्होंने थोड़ा-सा एक ग्रेडिएंट दिया है अपने बैकग्राउंड में, ठीक है? जिसकी वजह से कि थोड़ा-सा ये अ, मतलब प्योर व्हाइट नहीं लग रहा है ये, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो प्योर व्हाइट नहीं है ये। व्हाइट है, इसमें विज़िबिलिटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन हम ये नहीं बोल सकते इन्होंने प्योर व्हाइट का यूज़ किया है, ठीक है? थोड़ा-सा एडवांसमेंट होता तो हम लोग इसको थोड़ा-सा उस टाइप का लुक में बना सकते थे। अदरवाइज़ फीचर्स तो हैं, ठीक है? तो लुक में हो सकता है हमें थोड़ा और काम करना पड़ जाए। हाँ, तो अभी तो मैं व्हाइट को ही प्रेफ़र करूँगा, ठीक है? व्हाइट इज़ गुड। ठीक है। तो मेरे ख़्याल से अ मतलब हम वी कैन जस्ट यूज़ समथिंग व्हिच कैन जस्ट एनहांस इट्स विज़िबिलिटी, ओके? मतलब अभी तो ये बहुत सिंपल टाइप का लग रहा है। मतलब ये जैसे ये बैकग्राउंड है तो इसमें मैं कलर ग्रेडिएंट लगा सकते हैं, ठीक है? ग्रेडिएंट टाइप का कुछ जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर विज़िबिलिटी उसका थोड़ा अच्छा दिखे प्रोफ़ेशनली टाइप का, ओके। एंड यहाँ पे हमें सिर्फ़ बैकग्राउंड में थोड़ा-सा अपडेट्स करने होंगे, ठीक है? एक मिनट इसका जो बैकग्राउंड है इन दिस वन इज़ सर्च पेज कार्ड है ना? तो इनका जो बैकग्राउंड है हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अभी तो जैसे ये व्हाइट है, ओके? तो
अगर वाइट कलर में ही हम कुछ थोड़ा सा अगर हम इसे चेंज करते हैं, अ, तब इसे वाइट ही रहने देना है, लेकिन थोड़ा से वो होते हैं कलर्स को जो बनाया जाता है उससे बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है वो धीरे धीरे। थोड़ा सर सा जस्ट इसमें, बगल में एक है, हाँ सेकेंड लाइन इसका पे देखिए, कस्टम ग्रेडियंट के नीचे। सर कस्टम के नीचे, कहाँ पे? ये उसी के ऊपर, कस्टम के नीचे देखिए, सेकेंड लाइन पे हाँ एक इसमें ग्रेडियंट भी थोड़ा सा यूज ग्रेडिएंट, कर सकते हैं। और देन वी कैन यूज टूल में हाँ टू जिससे भी कलर्स। थोड़ा सा बेहतर लुक हो सकता है। ये तो ग्रे स्केल में दिखा रहा है, थोड़ा सा हम इसका कलर्स को उस टाइप का कर सकते हैं। सर इसमें क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं, कैन हाँ वो तो डू है। दिस। इसमें ग्रे की जगह हम लोग थोड़ा सा रेडिश या ऐसे कुछ डाल सकते हैं, है ना? इससे ये थोड़ा सा अच्छा दिख सकता है। ऐसा टाइप का कुछ। ओके। अभी ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है पहले से। एंड ये जो ऊपर में है इसका भी हम थोड़ा सा कर सकते हैं। वी कैन जस्ट, ये तो गूगल इमेज खुल गया। ये जो चीज है ये, व्हाट थिंग इज दिस? इसका बैकग्राउंड कहाँ से जनरेट हो रहा है? ग्रुप वन है ना? तो ये ग्रुप वन का बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है? फ्रेम वन, फ्रेम टू, सर्च। ओके दिस वन इज आई थिंक, ये तो दिस इज फॉर हमारा। गूगल फ्रेम 4, यू कैन टाइप यस। इसका फ्रेम कैसे हो 4। रहा है आनंद? ऊपर वाले जो हमारा हेडर है उसका बैकग्राउंड कलर कैसे, कौन से कंपोनेंट से कंट्रोल हो रहा है? सर फ्रेम 4 ट्राई कर सर सकते हैं वो उस पे से। गलती से फ्रेम में बन गया है, फ्रेम बन अच्छा गया है वो, फ्रेम में बन गया है, अच्छा अच्छा। इसलिए दिक्कत आ रहा है। ओ, तो इसके हेडर को भी मैं सोच रहा था कि उसका भी कलर को हम लोग हाँ थोड़ा सर, सा, कलर चेंज हो सकता है उसका तो। हाँ उसमें थोड़ा हम लोग करते हैं। तो ये फ्रेम फोर है ना, उसका भी एक कलर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फ्रेम फोर को एक डिफरेंट कलर दे सकते हैं, फ्रेम टू को भी कुछ डिफरेंट ऐसा दे सकते हैं जिससे कि सब ये, फ्रेम 4 के मैं फिल का दे रहा ऑप्शन, वहाँ पे आप चेंज क्लिक कर सकते हाँ हैं। यहाँ पे भी हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये कौन सा नीचे वाला फ्रेम कौन सा है? फ्रेम टू है ना? तो इसमें भी हम जैसे, क्योंकि ये सारा ब्लैक है ठीक है, तो हम लोग इसे लाइटर कलर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइक सम, हाँ इस टाइप का कुछ हो सकता है, ऑरेंज एंड, ऐसे ही रहेगा नहीं? ठीक है, इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट ऐसे दे देंगे। हाँ, और इसमें भी हम एक कलर को चूज करेंगे जो कि थोड़ा सा इसको जो है इनहेंस कर सके। हालांकि इसका विजिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, विजिबिलिटी शुड बी क्लियर। ठीक है, लो इसके थोड़ा सा अगर हम ऐसे करते हैं, ग्रीन या येलो, हाँ और दिस थिंग, सो दिस वन थिंग, एक एक कलर हो सकता है दिस वन। हम्म सो थीम के हिसाब से अगर इसका हम कलर चेंज करें तो आई थिंक ये बेहतर दिख सकता है। तो यहाँ मैं सोच रहा था कि इसका कुछ डिफरेंट, हाँ इस टाइप ब्लूइश टाइप का कुछ सही लग सकता है। मतलब नीचे अगर रेडिश है तो ऊपर थोड़ा सा ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसा हम लोग कुछ बना सकते हैं। और ऊपर वाला जो है वो शायद हमारा फ्रेम फ्रेम फोर है ना?
तो फ्रेम 4 को भी हम कुछ दूसरा ही कलर दें। यहाँ पे हम ग्रेडियंट का यूज नहीं करेंगे, हम लोग किसी दूसरे कलर का ही यूज करेंगे, जैसे कि हम्म, किसी दूसरे हेडर्स, हाँ कुछ इस टाइप का हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वी कैन से पहले कंपैरिजन में। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक। और ये जो बैकग्राउंड है इसमें मैं थोड़ा सोच रहा था थोड़ा और अच्छा कलर कुछ हो जाता तो अच्छा लगता। ये जो बैकग्राउंड है हमारा कंप्लीट, ठीक है, इसमें भी मैं सोच रहा था कि एक बहुत बढ़िया कलर हो सकता था। हाँ, इसमें हम दूसरा कलर्स क्या ले सकते हैं? अगर ग्रीन हम लेंगे तो, या फिर हम कुछ इस टाइप का लें। आ, इस सारे में ऑप्शंस दे रहे हैं। हाँ, ये कलर मुझे सही लग रहा है, ये भी अच्छा लग सकता है इसमें। ठीक है, ये देखिए थोड़ा अच्छा लुक रहा है, प्रोफेशनल टाइप का। वो थोड़ा सिंपल था, है ना? ऐसे हम लोग कुछ बना सकते हैं। ठीक है, इससे विजिबिलिटी भी इसकी सही लग रही है, और थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का लग रहा है। ठीक है, ओके। कलर साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग को थोड़ा देखना होगा इसमें, और सर कौन सा। फ्रेम हाँ 4 और फ्रेम 2 का कलर एक कर दे तो ज़्यादा सही लगता है। हाँ, फिल्म। वही हमें कलर साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखना होगा कि कौन सा कलर आई थिंक बेटर हो सकता है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से, एक मिनट रुकिएगा, इसे मैं थोड़ा साइड करता हूँ। सो अभी हम लोग इस पे जाएंगे, फिल में जाएंगे, एंड ग्रेडियंट्स में जाएंगे। ये वही था ना, सर्च पेज कार्ड व्यूज, इसमें फिल में जाएंगे, ग्रेडियंट्स। इसके कलर्स में हमारे पास दो कलर्स हैं यहाँ पे। अरे ये कहाँ सेलेक्ट हो गया? ओके, इसका आप आनंद थोड़ा सोचिएगा कि हम लोग इसका कैसे कलर दे सकते हैं। ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा बेहतर लुक हो सके इसका, है ना? मतलब कोशिश करिएगा लाइट ही रखने का। ठीक है, बट ग्रेडियंट पे रखना है सर। हाँ थोड़ा ग्रेडियंट में रखेंगे तो आई थिंक इसका लुक थोड़ा बेहतर हो सकता है। ठीक है। ओके सर। हम्म, ओके, ये हमारा fill this color stroke selection colors, color selections। बहुत सारे कलर्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कलर्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अब ये सब काम होता है
सर एक एक्चुअली वेबसाइट में है सर, ग्राफ। कलर्स के हाँ लिए। हाँ सर वेब ग्रेडियंट एक वेबसाइट है, हाँ हाँ, वहाँ पर वहाँ अच्छा से भी। कलर्स। हाँ, उस टाइप का भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हाँ एक्चुअली हमें बहुत सारे जब ऑप्शन दिखने लगते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। ठीक है, अभी तो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ वेबसाइट्स का देखना होगा बहुत सारे। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी देखिए सर ये वैसे अच्छा लग रहा है पहले से। बोलिए। मैं बोल रहा था एक वेबसाइट है सर, कलर टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। अच्छा, कलर टेम्पलेट्स देखते हैं। वेब वेब ग्रेडियंट। वेब ग्रेडियंट ना। यस सर, पहला ओके, वाला। दिस वन। हम्म इस टाइप के भी कुछ टूल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। सर नीचे नीचे स्क्रॉल करिए, हम्म कोड के साथ ये सब कलर प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। हाँ, तो ये कोड तो हम डायरेक्टली फिग्मा में इंटर कर सकते हैं ना, तो यस सर। हमारे लिए इसमें से देख सकते हैं कौन सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, सर एक और कलर हंट वहाँ भी देख सकते कहाँ पे? हैं, कलर हंट। कलर हेड। हंट HUNT। ओ अच्छा, वेबसाइट है कलर हैंड ना। यस। कलर हंट, यस। ग्रेडियंट्स यहाँ पे, ग्रेडियंट्स इसमें दिखेगा क्या? कुछ कलर ग्रेडियंट्स के ऑप्शंस। सेलेक्ट प्लेट्स, विंटेज गोल्ड। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ कलर्स मिल सकते हैं इस टाइप के। एंड ग्रेडियंट्स कितने तरह के हो सकते हैं, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा ग्रेडियंट इसमें अच्छा लग सकता है, वो हमें थोड़ा देखना होगा। ठीक, इसने तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हम कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक रंजन आपको भी कुछ इसी टाइप का ग्रेडियंट चूज करना चाहिए। लाइट है ना, डार्क वाला थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो लाइट वाले आई थिंक बेस्ट रहेगा, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट लाइट ही यूज हुआ है। तो होम पेज में भी आई थिंक कुछ लाइट टाइप का ही यूज होना चाहिए, है ना। तो कोशिश करिएगा आप सभी लोग, कोई एक ग्रेडियंट हम लोग चुनेंगे, और आई थिंक वही ग्रेडियंट जो है हम, मतलब ऑलमोस्ट उसी टाइप ग्रेडियंट हर एक पेज पे होना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी टाइप का। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं इसमें से। एक दो तो मुझे अभी मिले थे जो हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस वन विल नॉट, दिस वन विल नॉट, दिस वन विल। ये भी अच्छा लग रहा है, दिस वन। ओके, एंड ठीक है, इस टाइप का देखिएगा कौन सा अच्छा लुक लगेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विजिबिलिटी अफेक्ट नहीं हो उससे। ठीक है, विजिबिलिटी शुड बी क्लियर। ओके, एंड लुक भी अच्छा हो। जैसे अभी भी ये अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, पहले से थोड़ा सा प्रोफेशनल है, बस हमें ऊपर के हेडर में आई थिंक थोड़ा और अच्छा कलर हो सकता है। ठीक है, लेकिन विजिबिलिटी अफेक्ट नहीं होना चाहिए इससे, विजिबिलिटी को पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आनंद इसमें थोड़ा सोचिएगा, और वही जो ग्रेड होगा उसे इस पे भी लगा देंगे। ठीक है, सर ऊपर में भी ग्रेडियंट ही देना है या सिंपल कलर देना है? सबसे ऊपर प्रोफाइल। ग्रेडियंट, आई थिंक ग्रेडियंट ही सही रह सकता है ना। बहुत सारे हम मेनूज देख सकते हैं, जैसे कि बिल्ट इन जो मेनूज होते हैं नैब बार्स के, कुछ जैसे कि नैब बार्स हम लोग देखते हैं कितने तरह के इसके पास डिजाइन्स हैं नैब बार्स के। इसने भी, हाँ इसने भी ग्रेडियंट टाइप का दिया है, बहुत ही सिंपल, लेकिन इसका कलर थोड़ा दूसरा है, उसने बहुत ज़्यादा कलर का वेरिएशंस नहीं किया है। ठीक है, इसने बस स्टाइल दिया, कलर्स हम पे छोड़ दिया, आप जैसा कलर करना चाहें। यहाँ पे कुछ कलरफुल डाला है।
तो आई थिंक हम लोग इस टाइप का डाल सकते हैं क्या, ब्लू टाइप का ऐसे, या फिर नीचे वाला भी सही लग रहा है? हाँ सर, लाइट सही लग रहा था नीचे हाँ वाला। लाइट सही लग रहा है। हिडन लिंक्स, ठीक है, ओके। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसका। एंड आई थिंक आपका भी सही है रंजन। अ, बस इसका क्या उसके बोलेंगे, अ, मतलब थोड़ा लाइटर अगर हम इसको बनाते, ठीक है, तो आई थिंक सही रहता, मतलब उसके साथ मैच हो जाता जो हमारा, जैसे जितना सर्च पेज है, ठीक है, प्रोफाइल पेज, वो सब लाइटर कलर्स, लाइटर थीम का यूज किया है, ठीक है। तो थीम होता है ना, थीम हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करने लगते हैं, सब में सेम टाइप का थीम रहता है ना। तो अब क्योंकि अगर हम सब में डार्क रख देंगे तो आई थिंक विजिबिलिटी में थोड़ी सी इफेक्ट पड़ेगी। तो लाइट कोई हम लाइटर थीम, मतलब इसी का अगर हम थोड़ा सा लाइट बना दें, लाइट वर्जन, तो आई थिंक वो भी सही रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसका जो हम क्या उसको बोलते हैं, ह्यू इफेक्ट ना, ह्यू इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। ओके। हम्म, ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा, इसमें तो आपने बहुत सारे वैसे यूज किया है। तो इसमें जो भी ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका पहला वाला जो है, ये वाला है, इसका हम थोड़ा सा इसको डार्क के जगह थोड़ा सा लाइटर कर सकते हैं ऐसे, तो मेरे ख्याल से शायद ये हो सकता है ऐसा, है ना। बहुत ज़्यादा लाइट हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे लाइट करेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब सेम टाइप का वो दिखने लगे, ठीक है। और टेक्स्ट को भी हम कोशिश करेंगे कि वाइट ही रहे, ठीक है। ओके, तो देखिएगा हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई थिंक ठीक है, तो आप लोग का तो सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है, बस हमें थोड़ा सा लुक पे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड मतलब थीम हमें एक डिज़ाइन करना होगा, अपने वेबसाइट का एक थीम हमें सोचना होगा कि इसका थीम कैसा होगा, और वो थीम हर एक पेजेस पे अप्लाई होंगे, ठीक है ना। मतलब हर एक पेज में ऑलमोस्ट वैसा ही थीम होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ट्राई करिएगा एक थीम को क्रिएट करने का, ठीक है। फिर वही थीम हम लोग जो है इसमें अप्लाई कर देंगे सब। वैसे होम पेज तो बोल सकते हैं कि ठीक ही है, लेकिन मुझे बस ये लग रहा है कि अगर थीम कम्प्लीटली अपोजिट हो गया तो थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगेगा, है ना। कि सर्च पेज में जाएंगे तो हमें लाइटर थीम मिल रहे हैं और होम पेज पे हमें डार्कर थीम मिल रहा है ना। तो रंजन आप इसे ट्राई करिएगा थोड़ा सा, इसकी क्या उसे बोलते हैं, जो ह्यू इफेक्ट जो होता है इसका, ठीक है, वो उसे थोड़ा कम करने का। ठीक है ना, ये जो होता है जिससे हम ओके सर। लोग इसका डार्कर ओके और सर, लाइटर बना देते हैं, है ना। उससे थोड़ा सा हम कम कर देंगे तो आई थिंक वो एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। एंड टेक्स्ट भी उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है, आपको थोड़ा सा टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रखिए अभी के लिए फिलहाल, सारे टेक्स्ट को ब्लैक ही रखिए, ठीक है, ताकि वो लाइटर थीम के साथ मैच कर जाए, ओके। तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड रंजन आपका डॉक्यूमेंटेशन आपने बना लिया क्या इसका? यस सर। ओके, ठीक है। तो
आप ऐसा करिए, आप 1 दिन और ले सकते हैं, ठीक है? 1 दिन 2 दिन और ले सकते हैं। हम लोग को इसका थीम को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। हम लोग एक ही थीम हम यूज़ करेंगे, ठीक है? और थीम जो होगा लाइटर होगा थोड़ा, क्योंकि सारे में ऑलमोस्ट लाइटर थीम्स है, तो हमें लाइटर थीम को डिज़ाइन करना होगा। ओके। बाकी सब हम बोल सकते हैं कंप्लीट है। ठीक है, एंड आपको थोड़ा-सा इसमें रंजन चेंज करना है प्लेटफ़ॉर्म यूटिलिटी के जहाँ प्लेटफ़ॉर्म फीचर्स, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंटेशन को भी थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप मेबी कल या परसों आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है? जिसमें आपको सही लगे। ओके, एंड ठीक है। ओके, तो आज तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो आई थिंक बाकी जिन लोगों का है हम लोग उसके कल ले सकते हैं, ठीक है? ओके, तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं। तो आज आप लोग थोड़ा इसके थीम के बारे में सोचिएगा, ठीक है? हमें एक कंसिस्टेंट थीम लगानी है जो कि हर एक वेब पेज पे होगा, हर एक पेज पे होगा, ठीक है? एंड ऑब्वियसली इस थीम को लाइटर होना चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादातर पेज में लाइटर थीम का ही यूज किया है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट हम थीम को वैसा ही रखेंगे। एंड दूसरी बात का ध्यान रखना है कि विजिबिलिटी में इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है? हम उसके लाइटनेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मतलब कलर के डेंसिटी को थोड़ा कम कम कर सकते हैं, ठीक है? जिससे कि क्या होगा कि वो टेक्स्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? टेक्स्ट उसमें आसानी से विजुअल हो जाएगा। ओके। सर मुझे ये पूछना था सर, ये प्रोफाइल पेज में सर एआई असिस्टेंट का क्या यूज रहेगा सर? थोड़ा सा कंफ्यूज है सर। ओ, प्रोफाइल पेज में? यस सर। हाँ, प्रोफाइल पेज में आई थिंक, क्योंकि प्रोफाइल पेज में सब कुछ यूज़र अगर यहाँ पहुँचने वाले से किस तरह का प्रॉब्लम्स हो सकती है, किन चीज़ों को खोजने में उन्हें दिक्कत आ सकती है। आई थिंक उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, सिमिलर कंपनीज में, है ना? सिमिलर कंपनीज का हम उससे कुछ ऑप्शंस पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक टू सी some companies like this, okay, which have the same rating or company capital, okay? तो यस मतलब हमें सर। ये देखना होगा कि यूजर को यहाँ आने में किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जो ऑप्शंस देते हैं वो लिमिटेड होते हैं, हम हर तरह के ऑप्शंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है? कि यूआई हमारा उतना नहीं है कि हम हर चीज़ों को दे सके, कहीं भी अगर हम कितनों भी एडवांस यूआई बना ले, ठीक है? तो हर हर ऑप्शंस को हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन यूजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर चीज़ों को एक्सेस कर सके और पूरे वैसे जैसे वो करना चाहता है, क्योंकि अभी हमारे पास एआई का फीचर भी है, अभी एआई बहुत इम्प्रूव हो चुका है। ओके, तो उसकी ये इस कमी को हमें हटाना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे ही वो आएगा तो यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ जनरल आने के बाद वो उसका ज़्यादातर ध्यान होगा किस चीज़ों पे, कि क्या आप ऐसा कुछ इस कंपनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? व्हाट कैन बी द फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस, ऐसा कुछ इस तरह की उसे परेशानी हो सकती है, या फिर कैन यू सजेस्ट मी सम सिमिलर कंपनीज, ओके, व्हिच हैव द that revenue and that uh, that number of employees, like something like that, okay? यस सर। तो इस टाइप का ऑप्शंस हो सकता है। आपको कंज्यूमर की तरह सोचना होगा कि यस कंज्यूमर सर। जब यहाँ पे आता है तो उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है? और उन प्रॉब्लम्स को ऑब्वियसली हम एआई से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ों का तो कस्टमाइजेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन एआई जो है वो फुल कस्टमाइजेशन दे सकता है किसी भी चीज़ों को, ठीक है? तो हमें उसी हिसाब से सोचना होगा।
सर जैसे कि मैं ओके सर्च पेज को अच्छे से डिजाइन कर दिया है सर, उसमें एआई का भी मीन्स क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आप एक बार सर उसका प्रोटोटाइप रन करके देख सकते हैं सर, एक सर्च पेज में एआई इंटीग्रेटेड कर दिया है सर। सर्च पेज। ओके हाँ यहाँ पे। अच्छा। सर इसको चैट को मैंने स्क्रोलेबल बना दिया सर, आप एक बार प्रोटोटाइप रन कीजिए तो सब सही रहेगा। हम्म। तो ये जो चैट है सर इसको इसमें स्क्रोलेबल कर दिया सर। अच्छा ये सर हाँ आप ये तो दिख रहा स्टार्टिंग है। से स्क्रॉल तो हो रहा है। अंदर का जो चैट रहेगा ये आप एक बार इसको रीड कर लीजिए सर, ऐसा फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। सर, AI assistant here वो help you to find companies quick actions। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं बोला था कि मैं अभी प्रेजेंट कर दूं क्या? आई थिंक मैं कल थोड़ा एब्सेंट हो सकता हूँ। अच्छा कल आपका absent हो सकता है, तो आप ठीक है देखते हैं, अगर हम पास 10 मिनट हो तो हम लोग कर सकते हैं। ओके। ठीक है तो अंकित, अ, आपकी जो प्रेजेंटेशन कल ही होगी ठीक है, तो आप इसे तो उस हिसाब ओके से सर थोड़ा ओके। उस हिसाब से सोचिएगा थोड़ा, कि कंपनी यस प्रोफाइल पेज में हम कैसे करेंगे, सर्च पेज में कैसे करेंगे एंड होम पेज में कैसे करेंगे, क्योंकि यही तीनों पेज में हमें एआई की यस जरूरत सर। पड़ेगी। ठीक है। यस सर यस सर। ओके तो प्रामिश आपकी तो रेडी है लगभग। ठीक है। हाँ सर। हम्म। मैं ओके। बोला था सर कि कल मैं आई थिंक थोड़ा एब्सेंट हाँ हो सकता है। ठीक है ठीक है। ओके प्रामिश ठीक है, आप प्रेजेंट कर सकते हैं अभी। ओके। हाँ सर। हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। So I am Pramesh Marsal, and my task is to design authentication page that is login, sign up, and user profile, and user dashboard page, and also admin panel. So यस। this is the login and sign up page. Actually, the both is one. Actually, the both page are one. Means हम्म। when a user click on signing, then it will flip and go to the sign in page inside the login page, inside the sign up page. Means this is sign up page. If a user want to go to the sign in page, then if he click here, then this entire page is flip and convert into login page. And ओके। uh, हम्म। आपका थीम भी अच्छा है रमेश, बस मतलब इसका थीम आपने अच्छा बनाया, ठीक है, साइन इन साइन अप का। एंड प्रोफाइल पेज में, प्रोफाइल पेज भी सही है, अ, उसका हमें थोड़ा सा थीम को अकॉर्डिंगली हो सकता है चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, बाकी इसका कंटेंट तो सही मुझे लग रहा है। ओके ठीक है actually प्रॉमिस, पता यू कैन प्रेजेंट। ये वाला जैसे कि सर ये एक हम्म। साइन इन पेज है, हम इसमें होवर करने से ये एक तरह का पॉपअप मैसेज आएगा, वेलकम यूजर। मतलब यस। अ, यहाँ पर दो यूजर्स, मतलब दो टाइप के यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं। एक होता है यूजर और दूसरा होता है एडमिन। मतलब एडमिन, हाँ। एडमिन के लिए वो उसका एक अलग मतलब पासवर्ड होगा जो ईमेल और पासवर्ड देगा, वो वेरीफाई होगा हम्म। बैकग्राउंड में। अगर वो पासवर्ड एडमिन के पासवर्ड से मैच करता है तो वो एज एडमिन लॉगिन हो जाएगा। यस।
अगर हाँ सर ये वाला Hmm. सर, this is the sign up page. Uh, this is login page, and if user click in sign up page, then he go to the sign up page, and after fill all the form and term and condition, if he click on sign up page, then it was asked him to verify its mail, and when he verify, then it asks the OTP would send to the register email ID. Then Okay. if he can't get the mail, he can also click on recent email, recent mail. Yes. Hmm. So, and the user in this is the Yes. user dashboard page. According to rule, he can go to the dashboard page. Like if he role as user, then he can directly redirect to user dashboard page, and he works he is Hmm. as admin, then he redirect to admin panel. And Yes. in user dashboard section, he can also Hmm. edit his Hmm. profile and change password, and he can Hmm. do everything which under the user file. Like this is the user profile page. Here there are personal details and old password, update password, and language preference. All things are Hmm. present, and he can also edit or delete account, edit profile, or he can also delete account. If you click on delete account, it will ask a pop-up message. If he cancel it, then it will go back to the user profile page. And if he Hmm. click yes, it asks him to password to delete this account. Uh, Okay. this is the admin panel page. Hmm. Uh, फिर ये कुछ इसका बुकमार्क्स और सेव सर्चेस जैसे है, जैसे कि ये यूजर डैशबोर्ड में है ऑल लिस्टेड कंपनी सेव सर्चेस बुकमार्क पेज और रिसेंटली सर्चेस, मतलब कुछ Hmm. जो रिसेंट सर्च होगा कंपनी वो इसमें शो होगा, और अकॉर्डिंग टू यूजर जो भी कंपनी को वो बुकमार्क करेगा, तो इसमें एक लिस्ट फॉर्म या एक फिर एक कार्ड फॉर्म में ये स्टोर होगा एक पेज में, जो का जिसका एक्सेस डैशबोर्ड पेज में हमारा होगा। और ये होगा एडमिन एडमिन का पेज, जिसमें वो सब कुछ मैनेज करेगा, सब कुछ हैंडल कर सकता है ये। Hmm. हाँ सर, तो इसमें Hmm. टोटल काउंट ऑफ यूजर, टोटल लिस्टेड कंपनी, एक्टिविटी लॉग्स एंड यूजर्स से रिकवर हो गया, और इस सब का डाटा इसके पास होगा। जैसे कि ये यूजर का डाटा इसके पास है, और ये है कंपनी, कंपनी के जैसे क्लिक करेगा ये उसमें ओवरलैप करके इसका कंपनी डिटेल्स आ जाएगा, और इसमें ये लॉग वाला है। अच्छा। सर ये इसका एडमिन का पेज है। Hmm. सर हाँ सर, और इसमें ये वेरिफिकेशन जो दिया है, एक ईमेल वेरिफिकेशन, फिर डिलीट पासवर्ड, Hmm. ये एडिट करने के बाद ये डायरेक्ट इस पेज में आएगा। इसमें वो अपना यूजर नेम एडिट कर सकता है, अबाउट कॉन्टैक्ट लिंक्स, और इसमें ये डिलीट का ऑप्शन भी इसमें होगा इसके अंदर। मतलब यूजर यूजर प्रोफाइल पेज में डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें ये इसमें क्लिक करने के बाद वो पेज ओपन होगा जिसमें वो डिलीट कर सकता है। मतलब Hmm. आपने बोला था कि डिलीट बटन हम ऐसे फ्रंट पे नहीं रख सकते, इसलिए मैंने यस इसको यस। इसके अंदर। हाँ, सेटिंग्स में होना चाहिए वो। ठीक है। हाँ,
और सर ये इसका डॉक्यूमेंटेशन में कितना? हम्म, सर ये लॉगिन एंड साइन अप पेज का है। साइन अप पेज जिसमें 3 हम्म। फील्ड्स है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा प्रामिश, डॉक्यूमेंटेशन का स्क्रीन नहीं दिख रहा, आपका ब्राउजर का स्क्रीन दिख रहा है। आई थिंक आपने शेयर विंडो किया होगा। सर अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ सर। हाँ तो सर ये लॉगिन एंड साइन अप पेज का है। जो साइन अप पेज में 3 फील्ड्स हो गए, जैसे कि यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। और हम्म, वो साइन अप कर सकता है आफ्टर ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद। और ये है हम्म, लॉगिन पेज, जो इसमें एडमिन और यूजर दो ही मतलब लॉगिन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पासवर्ड। जो बैकएंड में पासवर्ड होगा वो एडमिन का होगा। वो मैच करेगा हमारा फील्ड जो पासवर्ड है उसके साथ, और बैकएंड में जो हम्म, पासवर्ड है उसके साथ मैच करेगा। और वो ओके। अ, एक एडमिन की तरफ से लॉगिन हो सकता है। हम्म, सर ये यूजर डैशबोर्ड, और जो यूजर प्रोफाइल डिटेल्स शो करता है, उसका नेम, ईमेल एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो इट्स एक्टिविटी। मतलब जो हम्म, भी ये बुकमार्क किया होगा वो सब डैशबोर्ड में ये शो होगा। और डैशबोर्ड में है एक और भी सेक्शन है, जैसे कि सेव डाटा और एक्सपोर्ट डाटा। मतलब वो जो भी बुकमार्क और सेव करेगा उसको वो एक CSV फाइल और एक PDF फाइल के जैसे एक्सपोर्ट कर सकता है उस डेटा को। हम्म, और सर ये कॉन्फर्म्स, मतलब जो मैंने बोला था कि वेलकम यूजर जैसे वो पॉपअप आएगा, फिर OTP वेरिफिकेशन का, बुकमार्क का, इस सब का ये कॉन्फर्मेशन स्क्रीन जैसा कुछ पॉपअप सा हम दे सकते हैं। और ये है हम्म, सेव डेटा, जो सभी डेटा इसमें लिस्टेड होगी जो भी यूजर ने सेव किया होगा। और ये बुकमार्क कंपनीज। और सर हम्म, ये एडमिन डैशबोर्ड, जो एडमिन एडमिन का डेटा और यूजर का डेटा रहेगा। उसमें एक कार्ड के फॉर्म में होगा, जिसमें सभी डेटा होगा, जैसे यूजर का, कंपनीज का, और रिसेंट एक्टिविटी। मतलब कौन कौन सा यूजर अभी लॉगिन किए है, कौन वेरीफाइड है, कौन पेंडिंग है, सब डेटा इसमें ऐड हो सकता है। हम्म, और इसमें वो मैनेज कर सकता है एडमिन को। मतलब अपने अलावा वो 2 या 3 यूजर्स को भी वो एज ए एडमिन सिलेक्ट कर सकता है, और उनको एडमिन बना के उनको एक्सेस दे सकता है पेज को। यस, सर नाइस, दैट्स इट सर। ओके। एंड दिस लॉग्स पेज व्हाट इज इट, shows logs of what action users administering। अच्छा ये यूजर के एक्शंस को दिखाएगा, हाँ सर। यूजफुल फॉर ट्रैकिंग सस्पिशियस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। उसके बाद उसके बाद भी कुछ था नीचे प्रामिश, हाँ सर, वो तो डिजाइन थीम एंड, थीम वाला सर। अच्छा ये समरी है, ओके। हम्म, ठीक, ओके बहुत बढ़िया प्रामिश। सो आपका डिजाइन सही है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। आपने इसका साइन अप का बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। ठीक है, ये सब भी सही है। बस हमें इसकी, मैं सोच रहा था कि हमें कंसिस्टेंट थीम पे काम करना होगा, ठीक है ना। आप हाँ सर। स्टॉप कर सकते हैं प्रामिस, ओके। सो ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि हमें कंसिस्टेंट थीम बनाना होगा, जो ऑलमोस्ट सारे पेजेस पे एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। और ये एक लाइट थीम होगा, जो कि हर एक बैकग्राउंड पे हमें दिखेगा, क्योंकि देखिए हम किसी वेबसाइट को जब सर्फ करते हैं तो हमें हर एक वेबसाइट का एक अपना थीम दिखता है, ठीक है, उसका वो उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमें भी एक ऐसा ही कंसिस्टेंट थीम को डिज़ाइन करके सारे पेजेस में वैसा ही करना होगा। जैसे आपका ये लॉगिन साइन अप सही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ग्रीन कलर का यूज किया है, तो अगर ये कोई पॉपअप मेनू है, तो पॉपअप मेनू हम बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप में तो बहुत सारे मिल जाते हैं ना बिल्ट इन पॉपअप, मॉडल्स में आएंगे, ठीक है।
तो किस टाइप के पॉपअप्स होते हैं, देखिए इस टाइप का हम सिंपल लाइट वाला बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें लाइट थीम ही सोचना होगा अभी कुछ। ठीक है, कि हमारा जितना कंटेंट हो वो लाइट के हिसाब से ही सही दिख रहा है। ठीक है ना। तो हमें इन सब में एक लाइट कलर का ही जैसे थीम रखना हो, कंसिस्टेंट थीम, जो कि हर हर में हमें उसी टाइप का दिखे, है ना। ताकि जब यूजर से सर्फ करे तो उसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं किसी दूसरे वेबसाइट पे तो नहीं आ गया, है ना। तो होता है ना, जैसे हम लोग किसी वेबसाइट सर्फ करने लगते हैं, जैसे यहाँ मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा मैं बूटस्ट्रैप में ही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसने कंसिस्टेंट थीम को हर जगह यूज़ किया है। देखिए एग्जांपल्स में भी चले जाऊँगा, आइकन्स में भी चले जाऊँगा। ठीक है, यहाँ थीम्स का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो अ, इससे हमें पता चलता है कि हम बूटस्ट्रैप वेबसाइट के अंदर हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना होगा, हमें एक कंसिस्टेंट थीम सोचना होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे थीम आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें से कोई एक थीम चूज़ करिए, ओके, जो कि हमारे वेबसाइट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैच करा हो। जैसे ये थीम भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये थीम, इसका इसमें तो प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये कौन सा थीम का इसने यूज किया है, ये थीम भी मुझे पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम कुछ सोच सकते हैं। गुड बिल्डर्स, वार्म, कूल, आलसी मोड, लाइट। ठीक है, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक कंसिस्टेंट थीम को सोचना होगा। ठीक है, जैसे कि उस यूजर को पता चले कि मैं इसी वेबसाइट के अंदर हूँ, कहीं मैं बाहर नहीं चला गया। ठीक है, तो जैसे प्रामिश आपका ये तो सही है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट लाइट थीम हम लोग बोल सकते हैं। इन सब में हम एक लाइट कलर का थीम हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पे बहुत सारे थीम का ऑप्शन देखिए, जैसे इसमें तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम हमें लाइट थीम ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसी में से कोई एक चूज़ करिए। ठीक है, और उससे जो है इसे इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ बहुत सारे थीम देखिए, जैसे ये भी थीम बहुत मस्त टाइप का दिख रहा है। ठीक है, जनरली हमें सिंप्लिसिटी ही रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग स्टाइलिश नहीं करेंगे ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो जाए। हमें क्योंकि डेटा को शो करना है, डेटा को शो करने के लिए विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसी टाइप का थीम सब सोचना होगा, जिससे कि डेटा अच्छे से विजुअल हो सके। बहुत ज़्यादा कलरफुल हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट जो है वो एक कंसिस्टेंट थीम पे ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा वो लोग कलरफुल नहीं बनाते। इनफैक्ट यूट्यूब में भी आप जाइए, ठीक है, गूगल का भी पेज पे जाइए, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसी ने बहुत ही ज़्यादा एडवांस में कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने फोकस किया है कि चीज़ें जो है वो एक ईज़िली शो हो। ठीक है, और लुक भी उनका थोड़ा-सा अच्छा हो। ठीक है, तो हर वेबसाइट इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये करना होगा कि सबके थीम को कंसिस्टेंट करना होगा। जैसे इसमें ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सही दिख रहा है। इन सब में हमें एक लाइट थीम का सोचना होगा, एक कंसिस्टेंट थीम जो सभी में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड हमें एक कंसिस्टेंट थीम के साथ हमें सोचना होगा। ठीक है, जो कि हर किसी में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तब जाके ऑलमोस्ट सेम जैसे दिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आशुतोष का है तो उसका उनका तो डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ठीक है, इनमें मुझे लग रहा है कि इसमें अगर थीम को हम लोग कुछ चूज़ भी करेंगे तो बहुत सोच समझ के चूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेन डेटा को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही थीम हम आप चूज़ करिए जिससे कि ये विजिबिलिटी पे इफेक्ट ना पड़े इसको, और सब कुछ वैसे ही दिखे जैसे अभी दिख रहा है। ओके, क्योंकि जैसा थीम हम लोग किसी एक पेज पर भी रखते हैं तो वैसा ही हमें सब पे ऑलमोस्ट वैसा ही रखना होगा। ठीक है, अ, ठीक है, आई थिंक ये
कंपनी प्रोफाइल पेज को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसका मुझे सही लग रहा है थीम, ठीक है, क्योंकि इसका लुक जो है ना, लुक ही इतना अच्छा है कि मुझे लग रहा है थीम का इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी सब में मुझे लग रहा है थोड़ा हम एक अच्छा थीम लगा देते तो इसमें थोड़ा हो सकता था। थोड़ा-सा अब लगता है कि वेबसाइट प्रोफ़ेशनल टाइप का कुछ लुक इसमें आ जाता, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिज़ाइन करने का सोचिएगा। ओके। एंड आज अ, ओके, देवेश तो नहीं आज, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप लोग इस पे देखिएगा थोड़ा, ठीक है, कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक पेज पे एक कंसिस्टेंट थीम होनी चाहिए, ताकि यूज़र को पता चले कि मैं इसी वेबसाइट के अंदर हूँ। ओके। एंड लुक पर भी हमें ध्यान देना है। आपने कंटेंट अच्छे से बना लिया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा कि हमें थोड़ा दिखाना होगा ना कि ये इस वेबसाइट को किसी डेवलपर टीम ने मिलके बनाया है, ठीक है। ऐसा दिखना चाहिए थोड़ा-सा। तो आपको कलर कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करना होगा। आपके पास पूरा इंटरनेट है, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कंटेंट तो आप लोगों का रेडी है, तो बस इसका लुक को थोड़ा हमें इम्प्रूव करना होगा, ओके। इसके बाद ये रेडी है, ठीक है। एंड जिनका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा-सा अभी कंप्लीट नहीं है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हम इनका डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट करना नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए सैटरडे तक ये कंप्लीट हो जाए सारा, ओके। ताकि नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको फुल्ली जो है कोड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास इसका डिज़ाइन है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो ईज़ी होगा इसको कोड में कन्वर्ट करना, उतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you, sir. Thank you, sir.